Yes. Jai Gurudev. Mm-hmm. Today's Satsang with Gurudev is being webcast live. We are joined online by thousands across 115 countries via Gurudev's YouTube channel as well as the Art of Living app.
Gurudev, if energy is just vibration, how can it be categorized as positive or negative? Is it just our perception? Please could you explain? On one level, yes. Energy is just energy. There is no positive, negative. But if you are an electrician, you know. Two lines. And any simple person would know in the battery there are two poles. If you, in your torch, if you put the positive to negative, negative to positive, it doesn't work. You have to put your cells, the batteries correct in your torch or any other instrument, isn't it? No. So both are true. And in the ultimate sense, energy is just energy. There's no positive, negative. But one step below that, you can feel that something that is different, in its very feel, you find some is positive, some is negative. Yeah. Gurudev, is Medha the same as IQ, or is it something higher? It's very difficult to translate Medha into English. IQ could be the closest, maybe. It's much more than just IQ, yes, of course. Gurudev, how do we ensure that we place our faith in the right people? Say that again. How do we ensure that we place our faith in the right people? Well, when you have clarity in mind, this starts happening. First you should believe in yourself. When you believe in yourself, then you can have faith in others. If your faith is only due through some miracles and some external glamour, it's not going to stick. But if you listen to your heart, the heart says, hey, this is the right thing. One is your mind gets charmed by various external things, glamour. And if your faith is based on just external glamour or verbal jugglery or such talents, that's one thing, that's a different thing. But when you listen to your heart says something different. Oh, you become sensitive to what is true, what is real, what is genuine. And then your heart moves in that direction. Then the faith comes there without any effort. You don't have to place your faith. If you try to get rid of faith, that is difficult. If you have faith in the right place and you try to get rid of it, it becomes difficult. It doesn't work. Yeah. So faith is not something that you intellectually decide and keep. It is little beyond that. It's something beyond, isn't it? Your gut feeling, your heart puts the faith there. Just for example, try to do that. You believe in somebody, try to doubt them. The more you try to doubt them, your effort to doubt and discard your trust becomes almost futile. Your mind again comes up with all judgments. No, that is not the case. It says like that.
So it is just the quality of our own being, our life, that determines how much faith we have. The stronger our being, the stronger the faith is. Yeah. Gurudev, it feels nice to dream big, but what is the way to achieve such big dreams? Is it possible for ordinary people like me? Oh yes, 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 yes. Those who think themselves are ordinary only can become extraordinary. If someone thinks I am extraordinary, forget about that. They may climb some ladders, but then they'll fall very fast. Gurudev, mind and prana is formless, and the body has a form. What connects the formless to the form? They are not separate to connect. It's like asking, how do I connect to the space? What do you mean? You are in the space. All the forms are in the formless. Only then you can even identify in the form. Do you see what I'm saying? And the formless is identified by the form. You take a pot, the space inside the pot can be identified because it is contained by some form, isn't it? An empty pot contains that empty space. Now think this way. Suppose a ball of mud is here, and then the same ball of mud is made into a pot. The pot is here. What do you buy? Which one would you buy? The pot. When you buy the pot, what do you buy in it? The space. The space by itself has no value. Mud by itself has no value. When they both come together, it becomes a pot. And the pot has a value, right? So the manifest, the formless, the unmanifest, the formless, the manifest form, they are complementary, they coexist, and they complement each other. Because of their being together, they can exist and they have value also. Gurudev, teenagers want to try out everything in the name of experimenting. How do we create a strong barrier in them so they don't indulge in drugs and other addictions? I don't think teenagers want to try out everything. There are certain barriers, they have it either by family tradition or by values. They won't. Don't think every teenager is involving or indulging in all sorts of rubbish things or even horrible things. No. Every individual grows by certain standards in life. They have certain standards, they have certain barriers. And so the parents must put those strong barriers, you see. And the environment also speaks quite a bit for that. Yeah. Yeah. Of course, religion definitely creates certain barriers in their lifestyle. In some way, it is good. See, a Muslim will never touch pork
And a Hindu will never touch beef. And similarly, there are many other things. These are the barriers put by the parents from the very young age. A Jain will never touch anything that is non-vegetarian. Because from childhood they said, oh, ahimsa, non-violence, non-violence. Vegetarianism is so well ingrained in the Jain families, they never touch. Barrier comes up naturally. Similarly, even those who eat meat, they have some barriers. In some part of the world, they use all the bugs as salad dressing. You know that. And in other parts of the world, they don't. Even the pets they eat. But there are barriers about the pets, not eating the pet. I had someone went to all the way from America to China, and then they asked someone, "Where you had a pet dog? Where is it?" I said, long time back, I know you had a pet dog. They said, you know. So there are people who consume many things. Like say flea market. But actually the fleas and worms, those things some people eat because they have no barrier about those things. Like that, we must create certain barriers and not create some other barriers. Instead of creating barriers about religion, race, gender barrier is such a worst thing in the world. These barriers should not be encouraged. And there are other barriers it's good to encourage. Because you see, kids, when they see their parents being alcoholic, the kids don't touch it. They come up with their own barrier. They see what's happening to their dad or mom, how they're drunk and they're not normal. And kids really start getting aversion towards it. Same with drug. If one boy in a house is a drug addict, the younger children, the younger brothers, they see them and they start putting a barrier on their own. They see their state of affairs, they say, no. Usually this happens. Doesn't this happen? When one elder brother is a drug addict, the younger brothers and sisters, they all come up with this barrier. Oh, no way, I don't want to do this. How many of you experience this? How many of you know this? So usually this happens. How many of you know that the father is an alcoholic and the children stay away from alcohol? Raise your hands. Raise your hands, let me see. Oh, yes. How many of you say that is not the case? The children also get addicted. Raise your hands. Some of you are not raising hands for both. मैं हिंदी में पूछता हूँ. अच्छा, कितने लोगों को ऐसा अनुभव है जब एक पिता या माँ या कोई माँ तो इतना होती नहीं, पिता या शराबी है तो बच्चे शराब से दूर रहते हैं? हाथ उठाइए. हाँ, आप ज़्यादा हाथ उठ रहे हैं. Why you need to keep away some of these habits is because it is not congenial for your evolution, for your growth, for your happiness. That's the reason. Right? Either it is not good for the body or for the mind or for both. So you keep away from those things. Yeah. Gurudev, you have mentioned that yantras are energy flow diagrams. Do such yantras exist
within the human body. Could you please speak about this? Yeah, there are many circuits in the body. If you do advanced course, you will understand about the mudras, how the mudras form different energy circuits. But I tell you, don't give too much importance to these things. Anything new you take, it is very thrilling. Wow, you say, oh, mandalas and yantras. Oh. But when you go too much into it, it's only temporary. Then you should know the self is much beyond all this. And meditation is the way. You want to go beyond the forms, beyond all the diagrams, all the energy circuits. Yeah, that is good. It's nice to look at it, but I have seen some people go so much into it and they get stuck. Yeah. That you don't need to do. Yeah. Gurudev, you have inspired 3 momentous World Culture Festivals, and we are eagerly looking forward to the 4th one in the US, happening from 29th September through 1st October. What is your vision behind these grand celebrations? We had our first World Culture Festival in Bangalore in 2006 when Art of Living wanted to celebrate its 25 years of service to humanity. And we did. We had thousands of artists come on the same stage and they did perform. We got 2.5 million people, 25 lakh people attended that program. Then we had our 30 years celebration. We took it to Europe. And that was 75 years of World War II. Then we wanted to do it in the Olympic Stadium in Berlin, from where the World War was announced. We said we will do world peace meditation from this place. So in Germany, we had the program in the Olympic Stadium. Again, it was such a great moment, coming together of all cultures. People from all these 150 countries came together. Then in 2016, you all know, we had 35 years of celebration in New Delhi. It was a magical moment. The 3rd World Culture Festival. Again, to remind the society, the world, that we are all one human family. We are part of one global family. That was so obvious in that celebration, and people are still talking about it even after 7 years. So in between, we want to do this on 2021, but because of Corona and all that stuff, we just pushed it a couple of years later. So now 2023, we will have the 4th World Culture Festival, just to remind ourselves that we are part of a global family. We know we are part of global family, but we need to remind ourselves and bring people from across the globe to celebrate life. Today, in a polarized world, there is so much of negativity and tension. It's only celebration and meditation coming together can uplift human spirit and take us to our true nature
which is love and care. So, in the spirit of bringing the world together in a sense of family, you know, and bringing the world together for a greater cause and for commitment to humanity, and reaffirming the message that we are all part of one global family. World Culture Festival is planned in Washington, D.C. and all are welcome there. Washington welcomes the world. Yeah. And those who see, today the technology has made it so easy. You cannot come there, you can always watch in the YouTube, watch in all the social media, all the medias are there, you know, social media and television. Everywhere it will be there and everyone can watch also. Yeah. गुरुदेव, आज हमारे बीच दो जाने माने इन्फ्लुएंसर्स नेहा कुलकर्णी और आरजे सोहम हैं। 20 वर्षीय नेहा कुलकर्णी को महाराष्ट्र की बेस्ट इन्फ्लुएंसर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा। नेहा मूल रूप से आजो नेहा। नेहा मूल रूप से पुणे की रहने वाली हैं और वह युवा पीढ़ी से जुड़े मुद्दों पर कंटेंट बनाती हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आरजे सोहम के सोशल मीडिया पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स हैं। आप एक लोकप्रिय रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर हैं। इन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, चलो चलो पूछ लो। नेहा, अभी करते हैं। हाँ। गुरुदेव, हम किसी को माफ़ करना चाहते या करना ट्राई करते हैं जिसने हमें बहुत हर्ट किया है, बट हमारा उससे बहुत लगाव है, प्यार है। पर जब भी कुछ छोटा मोटा नोकझोंक हो जाती है तो सबसे पहले वो बैड एक्सपीरियंस जो रहता है वो मन में स्ट्राइक हो जाता है। तो वो कैसे अवॉइड करें और कैसे पूरी तरीके से किसी को फॉरगिव करें, ये मेरा प्रश्न। अच्छा, जब आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते हो तो वो आपके जहन में घुस गए, आपके मन में घुस गए, बिना किराए के आपके ऊपर वाले मकान में, ये वाली जो घर में घुस के बैठ गए वो तो अब क्या करोगे? दिन रात उनके बारे में सोचते रहोगे। मान लो आप उसको माफ़ कर दे तो क्या होता है? वो वहाँ से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। अपना मन, अपना घर खाली हो जाता है। माफ़ उनके लिए नहीं करते, हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। अपने मन को बचाने के लिए हमें माफ़ करना पड़ेगा। नहीं तो देखो, दूसरे किसी ने गलती करी, उसकी गलती को कहाँ तक हम ढोते रहेंगे। आज किसी ने गलती करी तो हमने अपने आप को बेचैन कर ली, कल कोई और करता है, उससे फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। इस तरह से रोज़ रोज़ किसी और की भूल को हम याद कर कर के अपने शरीर को, अपने मन को क्यों खराब करें? ये तो बुद्धिमत्ता तो नहीं है। कि लगता है कांटा है तो कांटा तो कैसे उसके पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे, हाँ, है ना? हाँ। गुरुदेव, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं भी 23 साल का हूँ और मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि इस उम्र में मैं जो भी कर रहा हूँ वो एक्सेसिव हो जाता है। कहीं अगर काम कर रहा हूँ तो फिर मैं 16 घंटे काम ही करूँगा,
किसी पे अगर गुस्सा आ गया तो 3 दिन उसी में चले जाता है। कभी प्यार करूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा सब छोड़ के यही करूँ। तो गुरुदेव बैलेंस नहीं कर पाता हूँ ज़िंदगी में, और मुझे इस बात की गारंटी कि मेरे से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि हाउ टू फाइंड बैलेंस। नहीं, बस सबसे पहली बात तो ये है कि तुम ये बात समझ में आ गई कि मैं बैलेंस मेरा बिगड़ गया, मेरे बाइसिकल से मैं गिर गया। जब गिर जाते तो फिर उठ के बाइसिकल चलाते रहते हैं। भाई चलाते चलाते फिर गिर जाते हो, फिर उठ जाओ। बस ये पता चलना ही एक बड़ी बात है भाई। कितने लोगों को पता ही नहीं चलता कि अरे मैंने बैलेंस खो दी, मुझे सब बैलेंस करना है। ये पहली बात तो जानकारी में आ गई ना, तो समझ लेना तर गए। मैंने अब तो आप चलोगे, एक लक्ष्य पर चलना है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार गिरोगे तो भी वहां चलते रहोगे ना। तो ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी चेतना में, प्रज्ञा में कहीं ना कहीं हमको उसका दर्द महसूस होता है। अरे मैंने ये तो भूल गया, ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बिता दिया, ऐसा लगने लगता है। अरे आज मैंने बहुत टेलीविज़न देखता रहा, बहुत मूवी देखा, या बहुत ये सब देखा, बहुत टाइम आज बर्बाद हो गया, ऐसा मन में थोड़ा चुभता है। वही आपको उस रास्ते पर लगा देगा। गुरुदेव, मेरे पति किसी को कॉज करने के लिए बोलते ही नहीं। कहते हैं पहले ही हमारे गुरुदेव के पास इतनी भीड़ है, और भीड़ क्यों जमा कर रही है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? जब उनको बोलो, जब तुम बीमार होते हो, ये सोचो अस्पताल में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, वहाँ मैं भी क्यों जाके वहाँ भीड़ करूं। भाई थोड़ा करुणा तो करो, कृपा तो करो। तुम जितने तुम आगे बढ़ गए हो, तुम खुश हो गए हो, तुम प्रसन्न हो गए हो, ऐसे औरों को भी तुम मौका दो ना। उनके तुम्हें पता नहीं कि किसके भीतर क्या पड़ा हुआ है। कितने सारे लोगों, ऊपर से तो मुस्कुराते होंगे, उनके भी दिल में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। वो सब दूर करने के लिए तो उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। आए ना, हमारे पास जगह है, तुम चिंता न करो। पूरी दुनिया को हम परिवार मान के बैठे हैं, तो हर एक आदमी तो अपने परिवार के, तुम उसके एक निमित्त बनो ना लोगों को। वो तब देखो वो लोग तुमको भी बहुत धन्य भागी देंगे, ताकि उनके जीवन में रोशनी आए, सुकून आए, खुशी मिले, शांति मिले, तो तुम्हें भी तो धन्यवाद देंगे वो तो चिंता न करो इस बात की। हाँ, जितने भी भीड़ हो, फिर भी मैं सबको देखता हूँ। वहाँ कोई तारतम्य नहीं करते हम, कोई भी तारतम्य नहीं करते। हाँ। गुरुदेव, मैंने शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ रहने का निर्णय लिया, पर इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। गुरुदेव, कोई रास्ता बताएं कि मैं अपनी माँ और पत्नी दोनों को ही खुश रख सकूं। माँ और पत्नी को? दोनों माँ और पत्नी को खुश रख सकूं। भाई ये तो अनादिकाल से चला रहा है यार। ये तो भगीरथ प्रयत्न तुम तो कर रहे हो। करो मगर अच्छा, पूरा प्रयत्न करो। एक बात मैं कहूँ, एक रहस्य की बात, जब एक दूसरे की चुगली करते हैं तुम्हारे पास,
तुम उसको एहसास रिसाइकल करके उनको बता दो, यार आपसे तो वो बड़े खुश हो गए, तुमसे तुमने जो कहा उससे ये खुश हो गए बोलना। वो तुम्हारे पास ही आते चुगली करेंगे ना, वो नकारात्मक बात को तुम सकारात्मक करके दोनों को बताते जाओ। ये एक प्रयत्न करो, सब बनता है कि नहीं बनता कोई गारंटी नहीं है। तुम इस तरह से कुछ, अरे आज तो अम्मा ने तुमको इतना, तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोला, ऐसे पत्नी को बोलो, तुम्हारा तो तारीफ ही तारीफ करती है मेरी अम्मा, बोलो। सामने नहीं बोलती, पीछे से बोलते तुम्हारा। बोले ये अच्छा है, तो सामने तारीफ करके पीछे चुगली करे, उससे बेहतर है पीछे से तारीफ कर रही है अम्मा, सामने कुछ बोल देती है, भड़क भड़क उठती है, ऐसा बोल देना। और अम्मा के पास भी जाके बोलते थे कि देखिए मेरे वो, आप तुम्हारी बहू तुमको तो देवता ही मानती है वो। ये सब प्रयत्न करके देखना, नहीं होता है तो दोनों कान में रुई लगा देना, अनसुना कर दो, बीच में पड़ो ही मत, तटस्थ हो जाओ, ठीक है ना। अब तिरुपति में तुम लोग, कई लोग तो तिरुपति जाते हो, सुना तो है। तिरुपति बालाजी का भी ऐसी कहानी है वहाँ पर, मगर वो सौतन की लड़ाई झगड़े थे। पद्मावती और लक्ष्मी में लड़ाई झगड़ा हो गया नीचे, तो बालाजी को सिर दर्द हो गया, और पीछे 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 जाके सातों पहाड़ चढ़ के ऊपर चले गए, नीचे ये लोग लड़ते ही रह गए थे। और वो पीछे पीछे चल के पहाड़ में चले गए, तब पहाड़ चढ़ के वहाँ फिर सिर दर्द तो होता ही होता। फिर उनकी अम्मा आके उनके, भाई आंख बंद करो, आंख बंद करके पूरा कपूर का ठंडा करने के लिए कपूर का लेप लगा दिया। देखा ना, आंख पूरा लेप लगा हुआ, अभी भी आंख बंद करके खड़े हैं। एक कहानी ऐसा है। फिर नीचे ये लोग फिर घूम के देखे तो देखा कि अरे हमारे पति तो है ही नहीं, गायब। फिर दोनों ने समझौता कर ली, फिर दोनों ने समझ लिया हम दोनों एक ही है, कि हम दो अलग नहीं है, अरे एक दूसरे में विलीन हो गए, ऐसा कहानी है। कई बार ऐसा होता है, बहू सासू माँ के साथ लड़ती रहती है, जब वो खुद भी बहू होने खुद सासू माँ बनने लगती, तब दोनों जो है आपस में बड़ा मैत्री भाव लेके बैठ जाते। पर उतना समय तो इंतजार करना पड़ेगा। जब बहू भी सासू माँ बन जाती है तब कोई शिकायत नहीं रहती अपनी सासू माँ से। Gurudev, we're also joined by Prajakta Maliji. She's a noted Indian actress, known for her work in Marathi film and television. Her social media following amounts to 1.9 million followers. She has a question for you, Gurudev. जय गुरुदेव। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में आने से पहले जब भी कोई रोने का सीन था या कोई एंग्री होने का सीन है तो वो फटाक से हो जाता था। अब यहाँ आके मेडिटेशन सीख गए हैं तो अभी रोना ही आता नहीं है। तो बहुत तकलीफ, मतलब अरे रोने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं लेकिन सीन के लिए रिक्वायर्ड भी है। तो मेडिटेशन भी करना है लेकिन परफॉर्म भी करना है, इमोशनल टर्मोइल से भी गुजरना है, तो इसका ये क्या कैसे करें? देखिए, आंसू वैसे सहज रूप से नहीं आता है तो अच्छा है। ग्लिजरीन एक चीज होती है, वो लगा लीजिए।
इससे ज्यादा कुछ हो तो बोले कि थोड़ा सा मिर्ची लेके आओ कहीं से। या हैदराबाद की कोई भी खाना हो, वो थोड़ा सा मुंह में रख लेना, आंसू की धारा तो बहती रहेगी। हाँ, ये ट्राई करेंगे। और गुरुदेव, शादी करना सबके लिए कंपल्शन है क्या? आप हमसे पूछ रही है ये बात? ऐसी बात होता तो कब का मेरे बाजू में एक और कुर्सी लग जाता। ये डबल सोफा लगानी पड़ती थी। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखो, खुश रहना जरूरत है। आप शादी करके खुश रहो या अकेले रह के भी खुश रहो। कुछ लोग क्या है, शादी करके भी दुखी रहते हैं, अकेले रह के भी दुखी रहते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं। वो कुछ भी करके दुखी रहने वाले हैं, अकेले या शादी करके भी। या दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहे तो भी खुश है, शादी करके भी खुश है, दूसरों को भी खुशी देते। तो ये आप चुन लीजिए, आपको जो पसंद है। मुझे तो लगता है तो आप लोगों को ये विकल्प को हाथ में लेना चाहिए, खुश रहने की। ये जरूरी है। शादी करो ना करो ये आपके ऊपर है। हाँ, वो क्या बहुत 30-35 साल अकेले रह के इतना फ्रीडम, इतना मस्ती में रहने के बाद फिर 40 साल के बाद शादी करने के होता तो फिर जरूरत को सोच के, अरे मेरा जरूरत है, मेरे कोई भी टांग टूट जाए तो कोई सहारा लेके चलना पड़ेगा, बीमार पेट का बीमार हो जो कोई आके खाना बनाए इसलिए शादी करेंगे, ये बनती नहीं है। शादी में तो थोड़ा अपना छोड़ना पड़ता, सैक्रिफाइस। कई बार मैं बोलते लोग थोड़ा बड़े उम्र वाले शादी या सालगिरह में आते हैं, माला देता हूँ तो खुद माला पहनने लगते हैं। मैंने बोला अरे तुम्हें कोई अधिकार नहीं खुद माला पहनने का। माला दिया ना, उनको पहनाओ, अपने पति और पत्नी को। तो अब हर चीज़ तुम्हें उनसे पूछ के करना पड़े, ऐसा नहीं मनमानी नहीं कर सकते। अब दोनों का सहमति से गाड़ी चलेगी आगे, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो एक चक्का आगे पड़े दूसरा चक्का पीछे जाए तो गाड़ी ना आगे ना पीछे, कोई टूटने लगेगी, है ना। इसलिए शादी में यह है सैक्रिफाइस, माने त्याग बुद्धि। मन में इतना त्याग बुद्धि है तो हम अक्सर सोचते हैं अकेले रहने से तो त्याग के बैठे हैं। नहीं, शादी करके त्याग करना पड़ता है अपनी इच्छाओं को। त्याग का तो जरूरी वहां पर भी है, बल्कि अधिक है त्याग। महात्यागी कहते, कोई महात्यागी जो बड़े साधु संतों को कहते थे नहीं मैं महात्यागी नहीं हूँ, तो महात जो है जो सबसे बड़ा है उसको तो मैंने त्याग नहीं किया। तुम महात्यागी हो, तुमने उसको त्याग दिया जो सबसे बड़ा है, वही महात्यागी है ना। सबको गुरुदेव शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के ब्रह्मानंद सरस्वती हमने सुना कहा करते थे कि मैं महात्यागी नहीं हूँ, तुम सब लोग महात्यागी हो। वो पकड़ते, उनका कटु वचन से बोलते थे, ऐसा हमने सुना था। तो ये कहते मैं उनको बोले महात्यागी करके उनको इसने संबोधन किया, तो बोला मैं नहीं, आप सब लोग।
देखने की नजरिया अलग अलग है। ठीक है, हाँ, ओके। अब वो करना पड़ेगा ना। हाँ। अर्जुन।